Hello everyone, my name is Sumedha and today we'll discuss about friction. Now from the definition of friction, when a body moves or try to move over the surface of another body, then a force comes into play which act parallel to surface of contact and oppose relative motion. This opposing force is called friction. फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है से बॉक्स है, उसमें फोर्स अप्लाई करी इन दिस डायरेक्शन, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी? इसके ऑपोजिट, अपोज रिलेटिव मोशन एंड एक्ट पैरेलल टू सरफेस. मतलब कि जो सरफेस है उसके तो पैरेलल होगी एंड ऑपोजिट होगी फोर्स अप्लाइड या फिर मोशन के. So this is friction. Now, what is the main cause of friction? Cause of friction. Under cause of friction, we have two theories. One is old theory. According to this theory, consider we have two bodies, body A and body B. तो कोई भी सरफेस हमारे पास होता है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी जो अप्स या डाउन्स है बिटवीन टू सरफेसेस वो जाते थे इंटरलॉक. दैट मीन्स देयर इज अ इंटरलॉकिंग बिटवीन टू बॉडीज. अब इंटरलॉक की वजह से जो टू बॉडीज है उनके बीच में फ्रिक्शन आता था. दिस इज ओल्ड थ्योरी. देन केम अ मॉडर्न थ्योरी. मॉडर्न थ्योरी स्टेट्स दैट फॉर टू surfaces, say surface of body A and surface of body B, there is a intermolecular attraction. There is intermolecular attraction. That means जो दो बॉडीज है डिफरेंट या दो सर्फेसेस है उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनमें आपस में क्या है? इंटरेक्शन है. सो दीज वर द टू थ्योरीज विच एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. नाउ लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. वन वी हैव ड्राई फ्रिक्शन, or simply we call it friction. Second, liquid friction. And third, internal friction. Now, dry friction or simply friction is the friction which comes into play between two solid bodies. कोई दो सॉलिड बॉडीज है और उनके बीच में फ्रिक्शन है, दैट इज ड्राई फ्रिक्शन. लिक्विड फ्रिक्शन. अब लिक्विड फ्रिक्शन क्या है? से वी हैव अ फ्लूइड और अ लिक्विड, उसके लेयर्स होंगी. व्हेन टू लेयर्स, टू एडजेसेंट लेयर्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, say this layer is moving with v1 and this layer is moving with v2, when they are moving with different velocities, a friction force came which comes under liquid friction. And internal friction is for the particular object, for one object, or we say deformation of solids. This is deformation of solids. जब हम किसी सॉलिड को डिफॉर्म करते हैं या उसे ब्रेक करते हैं तब जो फ्रिक्शन होती है दैट कम्स इन इंटरनल फ्रिक्शन.
we'll study deeply about dry friction or friction. Now to study about dry friction or friction, we'll consider an example. Consider a box which is placed on the surface. Mass of box is m. तो forces कौन सी act होगी? One is mg and other is normal. So this box is at rest. तो इस पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है. जैसे ही मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगी, फोर्स एक्सटर्नल, टू मूव दिस बॉक्स इन दिस डायरेक्शन, तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तभी मेरी फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इनटू प्ले which opposes the motion f of s. Now what is f of s? Let's first discuss f external. This is the force which produce tendency of relative motion, and small f of x is the force which opposes the tendency of relative motion. That means जो मेरी f external है वो बॉक्स को मूव करने में हेल्प करेगी, एंड जो एफ एस है वो बॉक्स को, उसके मोशन को अपोज करेगी. सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक रहेगी जब तक बॉक्स मूव नहीं हो रहा है. अब मैंने फोर्स अप्लाई करी, बॉक्स स्टेबल है, अभी भी रेस्ट पे है, फ्रिक्शन अपना काम कर रही है. मैंने फोर्स और ज़्यादा अप्लाई करी क्योंकि बॉक्स को मूव करने के लिए और एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी. मैं अपनी फोर्स एक्सटर्नल को और इंक्रीज कर देती हूँ, जो एफ एस है वो और इंक्रीज होगा. दैट मीन्स विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ एस ऑल्सो इंक्रीजेस. दिस गिव्स मी दैट static friction is self adjusting. ये अपने आप को एडजस्ट करती है रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू एक्सटर्नल फोर्स. अब ये एडजस्टिंग फ्रिक्शन है ना, इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी होगी. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स कब तक अपना रोल प्ले करेगी? तब तक जब तक मैं मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स वो अप्लाई ना करूं जो इस बॉक्स को मूव कर दे. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल. फिर से देखते हैं. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, बॉक्स स्टेशनरी है, एक्सटर्नल फोर्स को और इंक्रीज करा, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हुआ, डायरेक्शन यही रही. एक्सटर्नल फोर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करा, फ्रिक्शनल फोर्स तब तक रहेगी जब तक वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ना पहुंच जाए. जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, विच इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जो फ्रिक्शन एफ एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन विल स्टॉप वर्किंग एंड द बॉक्स विल स्टार्ट स्लाइडिंग. अब जो बॉक्स है वो स्लाइड करना स्टार्ट हो गया. दैट मीन्स फोर्स लगाई, बॉक्स ने स्लाइड करा एंड से बॉक्स कम्स इनटू दिस पोजीशन. स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम कर ली, लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम कर ली. नाउ टू कीप मूविंग द बॉक्स we need some external force. We need external force to overcome
friction to overcome friction. अब जब बॉक्स स्लाइड कर रहा है, बॉक्स मूव कर रहा है, तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करते रहना पड़ेगा ताकि वो जो बॉक्स है वो स्लाइडिंग रहे, वो दोबारा रेस्ट पे ना आए. तो अब यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन लगती है? यहाँ पे वी हैव फ्रिक्शन फोर्स दैट इज काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन. From this example, we have three frictions. One is static friction, which acts when the object is at rest. When the static friction reaches its maximum value, which is limiting friction, the object just starts to slide. That is the limiting friction. And when the object starts sliding, to keep it moving, we need to overcome a kinetic or dynamic friction. So this was all about friction. So we have studied about friction. Now let's give a look to brief points of friction. Let's discuss about static friction. It acts before relative motion. Motion start होने से पहले static friction act करेगी. This is a self-adjusting. Numerical value is equal to the external force tendency to generate motion. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स मोशन नहीं जनरेट करती, जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम उतनी नहीं प्रोवाइड करते जितना कि मोशन को चाहिए, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ द लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन. जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया. Limiting friction does not depend what is the contact area between the two bodies. चाहे contact area large हो या contact area small हो, limiting friction does not depend on contact area. Now it depends on the nature of material. जो material है जिसमें friction लग रही है उसका nature कैसा है? It depends on that. The value is more than any other type of friction. Limiting friction की value is greater than any other type of friction. अब motion start हो चुका है बॉक्स का, then comes into play kinetic friction. This opposes the relative motion and this is less than limiting friction. That means the value of kinetic friction is less than limiting friction. Now let's draw a graph between applied force and friction force. Say on x-axis I have my applied force capital F or F external, and on y-axis friction force. Object is at rest. We apply एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज हो रही है. जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होगी, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगी. ऑब्जेक्ट इज एट स्टिल रेस्ट. तो ये कौन सी फ्रिक्शन फोर्स होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. देन वी कंटिन्यू टू इंक्रीज एफ एक्सटर्नल such that the static friction reaches its maximum value. जैसे ही static friction जो यहाँ से start हुई थी अपनी maximum value पे गई, the maximum value of static friction is what? Limiting friction. और external force apply करी, limiting friction cross हो गया, मोशन हो गया अब ऑब्जेक्ट का, द बॉडी स्टार्ट मूविंग, देन कम्स इनटू प्ले काइनेटिक फ्रिक्शन. फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन ऑल्सो सी दैट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. और इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है? जो मेरा पॉइंट है ये, लेट्स नेम देम O, A, B, C. जो मेरी लाइन है BC,
is parallel to OX. This is a very important result. This shows me that जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में आया उसका रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, तो मैं कितनी भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लूँ, जो मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो सेम रहेगी, दैट विल रिमेन सेम. फ्रॉम O to A it is static friction. At A maximum value of static friction, which is limiting friction. So this was the graph between the applied force and the friction. Now we'll study coefficient of frictions. First, static friction. This is the maximum value of static friction, mu s, and this is normal of the body. So mu s, which is coefficient of static friction, is equals to limiting friction upon normal of the body. Next, kinetic friction. This is kinetic friction. This is normal of the body. Therefore, kinetic friction upon normal is equals to coefficient of kinetic friction. Now, these coefficients are dimensionless and unitless. From this, we can also conclude that FL, that is limiting friction, is directly proportional to N, and from here Fk is directly proportional to N. Now let's talk about angle of friction. We have a box of mass m, mg is acting downward, normal, then the angle made by resultant of normal and friction force with normal is called angle of friction. That means friction force यहाँ act कर रही है, normal इधर है, इन दोनों का resultant R. So the angle between resultant and normal is angle of friction. So I'll take tangent of this angle lambda, which is equals to P upon B. Perpendicular is this is FL, and base is normal, which is equals to mu s, coefficient of static friction. So from here lambda is equals to tangent inverse of coefficient of static friction. Angle of response. So the next is angle of response. अब यहाँ पे क्या होता है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे सरफेस की जो हॉरिजॉन्टल है. व्हाट इफ अगर हमारा सरफेस इंक्लाइंड है, this is an inclined surface, so angle of response is the minimum angle of the inclination at which the body begins to slide. Say अगर this is my angle theta, body है, this body is not sliding, मैंने एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, बॉडी इज स्टिल नॉट स्लाइडिंग, मैंने एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया. सो द मिनिमम एंगल एट विच बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स. नाउ फ्रॉम द डायग्राम लेट्स सी, बॉडी का मास है m, mg is acting downwards, normal is acting upwards. One component of mg is mg cos theta and other is mg sin theta, and friction force is acting in the opposite direction of motion. अब ये inclined है तो motion किस direction में होगा, इधर, तो friction force opposite act कर रही है. अब mg downward act कर रहा है, this is acting in this way and normal यहाँ act कर रहा है. तो ये क्या होता है, हमने mg को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करा है. वी हैव एक्सिस, कंसिडर दिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. अगर तो मेरा कंपोनेंट या फिर अगर तो मेरी क्वांटिटी एक्सिस पे लाई कर रही है तो मुझे उसको रिजॉल्व करने की नीड नहीं है. नॉर्मल इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो मैंने नॉर्मल को रिजॉल्व नहीं करा.
but mg is not lying on axis. ना तो mg x axis पे है, neither it is on y axis. Therefore, I resolve mg in mg cos theta and mg sin theta, where theta is the angle between the mg and the y axis. Now from the diagram we can see FL is equals to mg sin theta. FL का डायरेक्शन ये है, mg sin theta का डायरेक्शन ये है, इक्वेशन 1, एंड नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos theta. Normal is equals to mg cos theta. Equation 2, equation 1 divided by equation 2, I'll get tangent theta is equals to FL upon normal. Now FL upon normal is equals to static friction coefficient mu s. So from here theta is equals to tangent inverse of mu s. From here we can conclude that angle of response is equals to angle of friction. So now let's see some problems of friction in our daily life. We see in our daily life pulling is much easier than pushing. Now let's get an answer to this question. Let's take first case of pulling. Object है placed on the surface, mass mg, normal reaction n. अब हमें पुल करना है ऑब्जेक्ट को, सो पुलिंग फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी. नाउ विल रिजॉल्व द कंपोनेंट्स. दिस इज f cos theta and this is f sin theta. This is angle theta. Now from this diagram, n normal plus f sin theta minus mg is equals to 0. मैंने vertical forces लिए n plus f sin theta, both are in the same direction, minus mg opposite direction is equals to 0, क्योंकि vertically कोई भी displacement या motion नहीं हो रहा है. So from here I'll get normal is equals to mg minus f sin theta. Normal is equals to mg minus f sin theta. So kinetic friction is mu k into normal. So friction is mu k into mg minus f sin theta. Now let's take the case of pushing. Again object is placed, mass mg is acting downward, normal reaction. Now for pushing, force किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी? इधर. This is angle theta. This will be f sin theta and this is f cos theta. Again taking the vertical forces, n mg plus f cos theta minus n is equals to 0. n is equals to mg plus f cos theta. Normal reaction आ गया and we'll get kinetic friction is equals to mu n into normal, which is mg plus f cos theta. So this is fk dash. Now from both the expressions we can see kinetic friction in case of pulling is less than kinetic friction in case of pushing. That means f of k is less than f dash of k. अगर friction ही कम है, friction is less, तो जो pulling होगी that will be easier as compared to pushing. Now we'll study acceleration of a body over a rough inclined plane. Acceleration of a body on a rough inclined plane. तो एक inclined plane है at angle theta.
body mass mg, normal reaction n. This will be mg sin theta and here mg cos theta on resolving. रिजॉल्व हमने mg को इसीलिए किया है क्योंकि ये किसी एक्सिस पे नहीं है. एंड फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इनटू दिस डायरेक्शन बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में. नाउ फ्रॉम द डायग्राम वी हैव mg sin theta minus friction force is equals to ma because acceleration is in this direction. F of k is equals to mu k into n. We know this relation. Now what is n? N is equals to mg cos theta. mg cos theta. Therefore f of k is equals to mu k mg cos theta. Now substituting the value of fk into this equation, I'll get mg sin theta minus mu k mg cos theta is equals to ma is equals to ma. M is common, g sin theta minus mu k cos theta is equals to ma. M get cancelled. So from here we get acceleration is equals to g sin theta minus mu k cos theta, where mu k is coefficient of kinetic friction. From this expression we can see that acceleration is less than gravity. तो जब बॉडी डाउनवर्ड्स इंक्लाइंड होगी तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी लेस देन ग्रेविटी. वी कैन डू अनदर केस व्हेन वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स and when we are applying external force and moving the body towards this direction on a rough inclined plane. So this case will be similar to, now there is another case similar to this case. In that case what we do, we apply external force and we move the body towards this direction. The process and procedure for solving this problem is similar to this only, and the result of this will be acceleration is greater than gravity. So from this we learned, जब हम hills पे जाते हैं तो जब हम climb करते हैं हमारा acceleration ज़्यादा होता है, हमें force ज़्यादा लगानी पड़ती है as compare जब हम downward fall करते हैं. So this was all about friction. We'll see you in the next video. Till then, keep revising.